At the moment when the Vice Chancellor came, there was a pre-planned attack on JNU on the issue of February 16th issue. And then, under that curve, what they have been doing is the real thing that their intentions were. So the first attack then came in terms of UGC regulation. And you also know that Vice Chancellor of JNU is also a member of the UGC. Now a UGC sort of makes a regulation which says that there will be a research supervision cap. So based on the category of professor that you are, either you are an assistant professor or associate professor or a professor, you will have different number of students who will supervise. Now, and then what they started sort of projecting that, see, UGC tells us a cap of a minimum number and you already have so many students under you, right? But they did not understand that why did professors in JNU had more number of students. And that goes back to the story of the Higher Education Institutional Act in 2006. When the OBC quota was introduced, actually the seats were increased, but the faculty positions, were not increased all of a sudden. Faculty positions were sort of, it was agreed upon that slowly we will also increase the faculty positions, which even till now has not been completely filled. But students' number had increased, and therefore the JNU faculty had agreed to take more number of students despite, whatever the limitations and restrictions they would have to face. It was never earlier counted as vacancy of students under a teacher. No. Students used to apply and you used to, qualify your exam, come for the Viva, and if you qualify the Viva, you were given admission. It was never based on the seats available or the vacancy available under a particular teacher. Right? It was an overall intake, and every center used to give that intake. I claim that it is not just the wrongful implementation of that UGC regulation, but the intention of the UGC regulation was wrong. It was a wrongful intention. ऐसी स्थिति में बहुत एक एंग्जाइटी थी, बहुत बड़ा मूवमेंट भी उस टाइम में हुआ। ये बोला गया कि इस तरह से जो यूजीसी गैजेट को जेएनयू पे थोपा जा रहा है, क्योंकि कोई भी गैजेट जो यूजीसी बनाता है उसको हर यूनिवर्सिटी अपने तरीके से लागू करता है, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ का अपना ऑटोनॉमी है, एक बॉडी है जो डेमोक्रेटिकली डिसीजंस लेता है। यहाँ पे एकेडमिक काउंसिल में बिना डिसीजन लिए कोई भी चीज़ें इंप्लीमेंट नहीं होती थी, लेकिन ये सब चीज़ें बाईपास करके यूजीसी गैजेट को इस कैंपस में लागू किया गया। हम मतलब जेएनयू की तरफ से बड़ा मूवमेंट होने के बावजूद वो हमसे नेगोशिएट करने नहीं आए। अल्टीमेटली ये लागू हुआ और हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो कैंपस में आ सकते थे वो नहीं आ पाए, जिससे हम देखते थे कि जहाँ पर दाखिला यहाँ पर होता था 1000 स्टूडेंट्स का एमफिल पीएचडी में, वहाँ पर उस साल अगर हम देखेंगे 174 के आसपास एमफिल पीएचडी सीट्स का दाखिला हुआ 2016 में। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि जो कैंपस का इतिहास था, जो सोशल जस्टिस का इतिहास था यहाँ पे, जो प्रोग्रेसिव एडमिशन पॉलिसी का इतिहास था यहाँ पे, जो डेप्रिवेशन पॉइंट्स मिलते थे, वो ख़त्म किया गया। और जो इक्का दुक्का लोग एडमिशन मिल भी पाए, उसमें जो हमारा सोशल जस्टिस का कॉन्सेप्ट है, जिसके लिए जेएनयू जाना जाता है, उसका खुलेआम जो है उल्लंघन किया गया। योग्य कैंडिडेट होने के बावजूद रिजर्व कैटेगरी के सीट्स जो है भरी नहीं गई। और दूसरा, अगर रिजर्वेशन वायलेशन की हम बात करें, जो सामाजिक न्याय की हत्या जेएनयू में पिछले 3 साल से, जब से ये वीसी आया है तब से लगातार होता जा रहा है। अगर इनके ही दिए हुए आंकड़े को हम उठाकर देखें तो हम देखेंगे कि लगातार एससी, एसटी और ओबीसी की जो सीट्स हैं वो नहीं भरी जा रही हैं। 2017 में जब एडमिशन्स हुए एमफिल पीएचडी के भी इस यूनिवर्सिटी में और स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ में, तो देखा जाता है जहाँ पे 250 के एमफिल पीएचडी के सीट्स थे वो घट के 2 में हो गया था, और सेंटर फॉर यूरोपियन स्टडीज़ जो थे और सेंटर फॉर साउथ एशिया में 1-1 सीट्स आए थे। और उसके बावजूद 2018 में भी जब हमारा एडमिशन्स हुआ, वहाँ पे भी भारी मात्रा में स्कटलिंग ऑफ रिजर्वेशंस हुए हैं,
जो स्टूडेंट्स प्रॉपरली रिजर्वेशन फॉलो करके आना चाहिए था, एक ब्लैंकेट कवर दे दिया गया 50% का, और 50% में जनरल कैटेगरी, SC, ST, OBC और माइनॉरिटी स्टूडेंट सबको एक ही रेस में खड़ा करके बोल दिया गया कि आप दौड़ो। और दौड़ने के बाद भी बोला गया कि आपके मेरिट के हिसाब से आप केपेबल ही नहीं हो, इवन आफ्टर कि आपको 50% की ब्लैंकेट देने के बाद बोला कि आपके मेरिट के हिसाब से आप केपेबल ही नहीं हो कि आप इंटरव्यू क्लियर करके आप इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले पाए। तो ये सारे चीज़ें डिसाइड कहाँ हो रहा है, जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस है वो भी कितना आर्बिट्रेरीली वायलेट किया जा रहा है प्रोसेसेस, ना टीचर्स की सुनी जा रही है इस यूनिवर्सिटी में। JNU जो पार्टी था एक मतलब एकेडमिक काउंसिल्स में या बोर्ड ऑफ स्टडीज़ में, वहाँ पे कुछ नहीं सुना जा रहा है, सब टेबल में पास बोल के ये वाइस चांसलर पास कर रहे हैं आर्बिट्रेरी तरीके से। So what you're doing is that you are on the one hand intentionally stopping people from, giving admissions, and then you are stopping particularly those people from taking admissions who are from the reserve category, right? So this was a step which was completely anti-social justice, right? Now this was challenged by the students in the High Court, and Delhi High Court gave a historic verdict saying that what JNU did was a national waste. And it was asked to rectify. It did not comment anything about whether the cap is right or not, because it said that's an academic matter and the academics are best to deal with, and we respect that. But it did ask JNU to rectify the mistake that it did. But JNU administration did not take any rectifying step, and in the next year admission, again calculating on the same basis of a wrongful implementation of UGC Act. And this, mind you, this data about the next year's admission has not been presented in the university till date. We are able to get hold of this data only because they have filed it in the High Court, where if you will look at the total number of seats left vacant overall and the total number of seats left vacant in the reserve category, the number, it should be proportionate. Whatever is the total number of your seats vacant, that should be the percentage of also the total number of seats vacant in the reserve category. But you will find that the total number of seats vacant in the reserve category is much higher than the total number of seats vacant in the overall category. So which means it can only be possible when you convert the reserve category seats into unreserved positions and unreserved seats, and you sort of transfer them. और सवाल सिर्फ नियमों की अनदेखी की नहीं है, सवाल इस बात का भी है कि समाज का एक बड़ा तबका जो ग्रामीण अंचलों में, जो सरकारी स्कूलों में जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है और एक खास तरह की सामाजिक पृष्ठभूमि से जो भी आता है, जो SC, ST और OBC होते हैं, अगर वहाँ का कोई बच्चा अगर उच्च शिक्षा के ख्वाब देखता है तो उसको JNU जैसी जगहों पर ही वो ख्वाब देख सकता है, क्योंकि उसकी औकात नहीं है कि वो जो प्राइवेट जो इंस्टीट्यूशंस है जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा फीस ली जाती है वहाँ पर वो एडमिशन ले ही नहीं सकता। तो अगर रिजर्वेशन का वायलेशन होता है, अगर सीट कट होती है, तो ये स्पष्ट सी बात है कि ऐसे लोगों का जो उच्च शिक्षा का ख्वाब है उसका ये कत्ल करने का काम यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा हो रहा है। हमारे कैंपस में भी हम ये बोल रहे हैं कि पूरा का पूरा सीट लाया जाए और लोगों को फैसिलिटी, कुछ सेंटर है जहाँ 2 साल से एडमिशन नहीं हुआ है, तो ये कैसे आप जवाब दे पाओगे। हमने ये सब बोलते हुए वाइस चांसलर को एक लेटर लिखा है, हम विजिटर को भी लेटर लिख रहे हैं, ये सब बोलते हुए कि हमारे ये दिक्कत है, खासकर सोशल जस्टिस के प्लैंक में। लेकिन सिर्फ सोशल जस्टिस का मामला नहीं है, कैंपस में जेंडर जस्टिस का इशू भी एक प्रोमिनेंट इशू है। इन दोनों ही इशू लेके हम अपने डिमांड को आगे लेके बढ़ाएंगे। 50 parliamentarians across political parties, except probably the ruling party, have written not only to sack this vice chancellor, but also institute an inquiry into his alleged misgovernance. We have been demanding for the last 3-4 years, but 50 members, 50 parliamentarians have responded to our call, and they have found merit in the charges or rather the issues on which
your short explanations from the Vice Chancellor. But all he has been doing is evading. He doesn't want to face these critical questions. He wants to selectively meet people. JNU for them represents a model, and this model, if can be destroyed, then they will use this model and replicate it everywhere else. I mean, the attack on JNU is therefore sort of important in that sense for them, that if they are able to demolish this model, then they can do it, replicate it anywhere else. Now, remember that JNU is the only central university which is of a national character. Now, when I say national character, every central university is national character because students come and join them. But it is not that students come and join only. We outreach as a national university. It's the only central university which conducts exams in 54 centers, 54 cities and 83 centers. No central university actually conducts exam in 54 cities, right? So that gives JNU as a national character, and therefore people from the remotest to the remote area are able to reach this university. And and this can be established by the fact that even when the UGC wrongful implementation of the UGC was done, and there was only one seat in particular center, yet the exam had to be conducted nationally. Yet everybody was given the chance to appear, even for that one seat. They could not take this decision that okay, there is one seat, so we'll call exam only in Delhi, because it flows from the JNU Act. And that was the intention of the JNU Act, that you allow the poorest of the poor, the remotest of the remotest, the marginalized of the marginalized to give them the opportunity to come and study in JNU. Right? Now that is something which then will tell you that why higher education is under attack. Right? Why they do not want critical thinking, why they do not want to have or allow a space which strengthens critical thinking. And therefore for them destroying higher education is one of the prime agenda, and JNU is a model which they want to destroy.